Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed meaning of accounting, its features, qualitative characteristics, difference between bookkeeping and accounting. Any doubt, anyone up to there? No? Okay. So today we will discuss about users of accounting information. Who are the users of accounting information of any business? These are those people who might be interested in looking at the accounts of that organization. Why will they like to see the accounts of the organization of the business? Because they may want to know about the profitability of the business. They may want to know about the financial position of the business. They may want to know how efficiently the business is being run. Right. Now, who can be all these people who may be interested in all these things, knowing all these things about a business? All these people can be classified or categorized into two main categories. One is the internal users and the other is external users. Internal users means those who are part of the organization. First internal user is owners. Owners or proprietors who are running the business, who own the business. Why will they be interested? If you start a business, if you are running a business, won't you be interested in knowing how profitable is your business? Whether it is earning profit or incurring a loss? If profit, then how much profit? If loss, then how much loss? Obviously, you would like to know. Okay, so owners are interested. Similarly, they would also like to know about the financial position of the business. In previous class also we discussed there is a difference between these two, profitability and financial position. Uh, we can take an example, we can compare these profitability is the income, financial position is the wealth. Okay, there are four possibilities. Let's talk about an individual first. An individual person may have very good income and very good wealth also, financial position also. On the other hand, it is also possible an individual may have very less income and very poor financial position, very less wealth also. Is it possible that a person having very good income has a poor wealth, poor financial position? Yes, it is possible. How? If the person is spending more than whatever he or she is earning. ठीक है, सपोज किसी की इनकम तो मंथली 1 लाख रुपीज है, अच्छी इनकम है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस 1 लाख से भी ज्यादा है मंथली, इतनी ओवर स्पेंडिंग की आदत है उसे। तो अच्छी इनकम होते हुए भी जो ओवर एक्सपेंडिचर की आदत है उसकी वजह से दिस पर्सन विल ऑलवेज कीप बोरोइंग मनी फ्रॉम अदर्स, will keep taking loans and will be trapped in a debt trap. Debt trap क्या होता है कि पिछले लोन पे नहीं और हो पा रहे और लोन लेने पड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ डेट ट्रैप। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं आपके आसपास, आपको दिखेंगे बड़ा लैविश लाइफस्टाइल लीड करते हैं, इनकम बड़ी अच्छी है लेकिन बहुत सारी चीजें उनकी लोन पे हैं और लोन रीपे करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और जब लोन रीपे नहीं कर पाते तो फिर जिनसे लोन लिया हुआ था, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, वो सब फिर लीगल एक्शन लेते हैं उसके अगेंस्ट। एंड द पर्सन डिस्पाइट हैविंग वेरी गुड इनकम मे एंड अप इन अ प्रिजन, may lose everything, all the property may be taken over by the lenders. So
it is very important to maintain financial wisdom. Especially being commerce students, you should be very careful. Buy only those things which are necessary. Spend only that much amount which is necessary. We must avoid overspending in all cases. And especially, you should always avoid taking any loan, taking any credit. Learn to live within your means. वो कहते हैं ना, उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए. Means learn to live within your means. Simple living, high thinking. That is the motto and that is the driving force of our culture, Indian culture. ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है. इसकी ऑपोजिट पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इनकम किसी की बहुत कम है लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी अच्छी है. कैसे हो सकता है? दो रीजन हो सकते हैं. फर्स्ट, एंसेस्ट्रल इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो उसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, बेशक खुद की इनकम कम हो. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि थोड़ी इनकम में से भी इतना समझदार वो इंसान है कि थोड़ा थोड़ा सेविंग कर लेता है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है. तो वो थोड़ी थोड़ी सेविंग करते करते कई सालों में उसने वेल्थ अच्छी एक्यूमुलेट कर ली है कि कभी कुछ जरूरत पड़े अचानक तो उसके पास सफिशिएंट फंड्स हैं मैनेज करने के लिए. सो सिमिलरली इन केस ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो all four possibilities are there. Good profitability, good financial position. Poor profitability or losses, poor financial position. Good profitability but poor financial position, and poor profitability but still good financial position. All these four are possible. कोशिश हमारी क्या रहनी चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बनी रहे, प्रॉफिटेबिलिटी या अर्निंग भी अच्छी बनी रहे. ठीक है, एज एन इंडिविजुअल भी एंड फॉर अ बिजनेस ऑल्सो. एंड एज एन इंडिविजुअल, एज आई टोल्ड यू, उसका तरीका क्या है? मस्ट सेव सम पार्ट ऑफ योर इनकम. एटलीस्ट 20% ऑफ द इनकम मस्ट बी सेव्ड एवरी मंथ. ठीक है, एटलीस्ट. द मोर यू सेव, बेटर इट इज, बेटर विल बी योर फाइनेंशियल पोजिशन. अवॉइड एनी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर. Avoid any kinds of loans. Avoid any kinds of credit. Then managers. Second, internal users are managers. Managers are the people who manage the business, who are employees in a business organization and their main job is to manage everything. So obviously they would like to know how well they are managing, how profitable the business is, what is the financial position of the business, right? So managers have to take various decisions about the business. On the basis of what? On the basis of accounting information, on the basis of financial information of the business, right? Then third, internal users are employees. Now, why will employees be interested in the accounting information? वो अपना काम कर रहे हैं, they are getting salary for that. Why will they be interested in accounts? They will be interested in accounts again for two purposes, mainly profitability and financial position. Why? Profitability में इसलिए interested होंगे कि if the business is earning a good profit, then they can demand increase in salary, because after all business is earning profit because of their efforts, because of the hard work they are putting in for the business, right? They can demand bonus, they can demand increase in salary and so on. Second thing, financial position. Why will they be interested in? Because if the financial position is good, then that means this business is going to run for a long period of time. So their jobs are secure.
If financial position is poor, then the business may be shut down anytime. So their jobs are insecure. They will start looking for better opportunities or other opportunities in other organizations. These were internal users. Then come external users, means people who are not part of the organization, but they are still interested in accounting information of the organization. Why and how? Let us see. First is potential investors, means those who are thinking of investing funds in the business. Okay. Now, before investing their funds in the business, obviously they would like to know how profitable is the business, so that they can be assured that they will get regular returns on their investment. Secondly, they would like to know the financial position of the business because they want to ensure safety of their funds. ऐसा ना हो कि जो पैसा वो इन्वेस्ट करें वो पैसे डूब जाएं. So potential investors are interested. Second is lenders. Lenders will mainly include banks, financial institutions, but it may also include individual persons, money lenders, friends, relatives, who lend money, means who give loan to the business firm. Now, why will they be interested? Because before giving a loan, they want to ensure whether the firm will be able to repay their loan or not. अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, उन्हें लग रहा है कि ये तो रीपे नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो लोन नहीं देंगे. आप किसी भी बैंक से कोई भी लोन लेने जाओ, वो आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपकी इनकम के प्रूफ मांगेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, सबकी डिटेल मांगेंगे आपसे. व्हाई? फॉर दिस वेरी रीजन. सेकेंडली, प्रॉफिटेबिलिटी में वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे? बिकॉज दे हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन द लोन दैट दे आर गिविंग. तो इंटरेस्ट तभी दे पाएगी ना बिजनेस फर्म जब उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे. सो लेंडर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म. देन कम क्रेडिटर्स. Creditors are the suppliers who sell goods to the business firm on credit, or we can say from whom the firm buys goods on credit. उधार पे जिनसे खरीदते हैं सामान. तो उधार कोई किसको देगा? उसी को देगा ना जिससे पैसे बाद में मिलने की उम्मीद है, श्योरिटी है. अगर उन्हें पहले ही लगेगा कि नहीं ये तो पे नहीं कर पाएंगे, तो वो उधार नहीं देंगे, क्रेडिट नहीं देंगे. ठीक है. सो क्रेडिटर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड in knowing the profitability and financial position of the business before deciding whether they should give credit to the firm or not. If yes, then how much credit they can give. That also they decide on the basis of financial information of the firm. Then come customers. Now, customers का क्या इंटरेस्ट है किसी फर्म के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में? आप कोई नोटबुक खरीदने जाते हो, कोई पेन खरीदने जाते हो, तो क्या आप शॉपकीपर से कहते हो पहले इस कंपनी के अकाउंट्स दिखाओ, हमें तब डिसाइड करेंगे? नो, वी डोंट डू दैट. तो ये डेली यूज आइटम्स के केस में इतना नहीं मैटर करता, या लेस एक्सपेंसिव चीजों के लिए इतना मैटर नहीं करता. बट यस, व्हेन you are going to invest a huge amount in a big asset, for example, someone is planning to buy a car or a house, then these customers may be interested in knowing the financial information of the company or the business whose car or whose constructed house they are going to buy. Why? Because if the financial position
of the company, of the business. Let us take an example of car. ठीक है, सपोज आप कार खरीदने जा रहे हो, तो अगर आप एक ऐसी कंपनी की कार खरीद लेते हो जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब चल रही है, कभी भी दैट कंपनी में बी शट डाउन, तो आपकी कार की सर्विस कहां पे होगी अगर कंपनी बंद हो गई? उसके स्पेयर पार्ट्स कैसे मिलेंगे आपको? प्रॉब्लम हो सकती है। तो समझदार कस्टमर्स ये चीज भी माइंड में रखते हैं खरीदने से पहले कि जो चीज लॉन्ग टर्म तक यूज होनी है, उसकी सर्विस के लिए, उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरर की जरूरत उन्हें पड़ती रहेगी। तो मैन्युफैक्चरर की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहते हैं पहले वो, कि साउंड है, अगर लंबे टाइम तक वो कंपनी रहेगी, सरवाइव करेगी, देन ओनली दे वुड लाइक टू बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है, एक कंपनी थी कार की, देवू, कुछ टाइम पहले तक इनकी कार्स आती थी, फिर अचानक वो कंपनी शट डाउन हो गई, लॉसेस में जा रही थी। और शट डाउन होने से क्या हुआ, जिन लोगों ने उसकी कार्स खरीद रखी थी उन्हें स्पेयर पार्ट्स मिलने बड़े मुश्किल हो गए, कोई भी जरूरत पड़ जाए तो सर्विस करवानी मुश्किल हो गई, क्योंकि वर्कशॉप्स वगैरह बंद हो गई सब कंपनी की उसकी, तो उन्हें लोकल मैकेनिक्स पे डिपेंड करना पड़ा फिर। सो दिस इज व्हाई कस्टमर्स में बी इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल पोजीशन। नाउ कमिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी, why may the customers be interested in profitability of a firm? Generally they will not be interested, but yes, if there is some essential commodity and for example food items are there, और अगर उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कस्टमर्स डिमांड कर सकते हैं कि भाई आप हमें अपने अकाउंट्स दिखाओ जरा। अगर जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, देन कस्टमर्स कैन कलेक्टिवली प्रोटेस्ट एंड डिमांड द प्रोड्यूसर्स टू रिड्यूस द प्राइस, so that these essential commodities can be available to them at reasonable prices. If the producer does not listen, they can even complain to the government, and the government may ask the producer or pass a law fixing the prices of those essential commodities. ठीक है, अभी पीछे कोरोना जब बहुत ज्यादा फैलना स्टार्ट हुआ था, तो सैनिटाइजर्स के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। सैनिटाइजर्स के प्राइसेस मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। देन मैनी कस्टमर्स स्टार्टेड कंप्लेनिंग, एंड देन द गवर्नमेंट फिक्स द मैक्सिमम प्राइस पर लीटर. What is the maximum price for the sanitizer that the producers can charge? ठीक है, so for these reasons customers may be interested. Then government authorities. Which government authorities? Taxation authorities, because they have to collect tax, goods and service tax, GST collect करना है जितनी सेल्स हुई उस पे, इनकम टैक्स कलेक्ट करना है जितना प्रॉफिट हुआ उस पे. सो फॉर दैट they need to look into the accounting information of the firm to see whether the firm is paying proper taxes or not. Then general public. Why will general public be interested in the accounts of any company, of any business firm? Again, generally they will not be interested, but if any company, if any business is affecting their lives by its operations, for example, some business organization, some company is cutting many trees, then the public will be concerned because they are spoiling the environment, which has adverse health effects on them. If some factory is causing a lot of pollution, again, the general public means those who are not even customers, lenders, borrowers of the company, still they will be interested that their health should not be affected. But what has this got to do with the accounts of the company? If the company, if the business is making good profits, they can pressurize the company, or either themselves or through the government, to install proper equipment to reduce the pollution.
to ensure that they do not cause any harm to the environment. Right? So for these purposes, public may be interested. Then come researchers, people doing research. There are many people who do research on business organizations also. So they will be interested in the financial information of those business firms to carry on their research. These were the users of accounting information. Any doubt? Okay. Now we move on to advantages of accounting. What are the benefits if systematic records of all business transactions are maintained? First benefit is we get financial information about the business. Profitability के बारे में, financial position के बारे में हमें information मिलती है. The second point is assistance to management. It helps the management in taking decisions by providing information which helps in planning, decision making and controlling. ठीक है, बहुत तरह के डिसीजंस लेने होते हैं मैनेजर्स ने जिसमें उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है टू टेक दोज डिसीजंस. फॉर एग्जांपल, इफ द बिजनेस इज डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स and the managers want to decide whether the production of a particular product should be increased or it should be reduced or totally shut down. They can see the profitability of that product. अगर profitability अच्छी है, sale अच्छी हो रही है, they may increase the production. If the sales are declining, if the product is going in losses, they may decide to shut down that production of that particular product. Then third point is replacement of memory. Means just imagine hundreds of transactions taking place in a business every day, thousands or lakhs of transactions taking place throughout the year. Is it possible for a manager or for the owner to remember all these transactions? Not at all. So by maintaining proper record, there is no need to memorize these transactions. Whenever whatever information is required, even if it is of several days back, it can be fetched from the accounting records easily. Next is comparative study. If we have maintained proper accounting records, we can compare the financial position and profitability with that of previous years, also with that of other business firms. Then helps in settlement of tax liability. अगर अकाउंट्स प्रॉपर नहीं मेंटेन करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा इनकम कितनी है हमारे बिजनेस की, तो इनकम टैक्स कैसे पे करेंगे. अगर हमें एग्जैक्ट सेल का अमाउंट नहीं मालूम होगा, हाउ विल वी पे द जीएसटी. सो इट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन knowing what amount of tax is to be paid, and if there is any dispute with the tax authorities, even then it will help us, as it will be a proof. The accounting information, the receipts, the vouchers that we have, the bills that we have, we can show them if required as a proof. So not only for tax purpose, but otherwise also, if there is any financial dispute, suppose there is a creditor to whom we had to pay some money. As per our records, we have paid the money, but the creditor claims that the money has not been paid. We must have a receipt given by that creditor, which is part of accounting records. We can show that receipt. That will serve as a proof. Right? Then sale of business. If the business is to be sold anytime, बहुत से रीजन हो सकते हैं बिजनेस सेल करने के.
एक तो हो सकता है कि बिजनेस हमारा लॉसेज में जा रहा है, लॉसेज में जा रहा है तो कोई खरीदेगा क्यों? मे बी क्योंकि उसे लगता है कि वो प्रॉफिटेबली रन कर सकता है बिजनेस को, ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है सेल करने का। दूसरा रीजन हो सकता है मे बी नाउ वी वांट टू डू सम अदर बिजनेस एंड सो वी वांट टू सेल ऑफ दिस वन। देयर मे बी अदर रीजंस आल्सो, right? So if the business is to be sold, at what value can it be sold? That value can be determined on the basis of accounting information. बैलेंस शीट में देखेंगे एसेट्स की टोटल वैल्यू क्या है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, कैश बैंक बैलेंस है, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर वगैरह, उसकी टोटल वैल्यू क्या है। फिर देखेंगे लायबिलिटीज कितनी है, मतलब कितने लोन लिए हुए हैं जो रीपे करने हैं, कितना उधार लिया हुआ है जो पे करना है। लायबिलिटीज का अमाउंट एसेट्स के अमाउंट में से लेस कर देंगे। सपोज एसेट्स 20 लाख के हैं एंड द लायबिलिटीज आर 6 लाख, सो दैट मींस अ फेयर वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस, जिसको हम नेट वर्थ भी कहते हैं, दैट इज अराउंड 14 लाख रुपीज। सो इन दिस वे इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द सेल वैल्यू। फैसिलिटेट्स टेकिंग लोन्स, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जब भी किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाएंगे तो पहले वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे लोन देना है या नहीं। असिस्टेंस टू एन इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन इज समवन हु इज बैंकरप्ट, कि मतलब जिसके पास इतने भी एसेट्स नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज टाइम पे कर पाए, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोर्ट में उसके लेंडर्स क्रेडिटर्स जाते हैं तो कोर्ट उसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही सारी डिटेल्स पता करेगा, व्हाट ऑल प्रॉपर्टीज दैट पर्सन हैज और दैट बिजनेस हैज। द कोर्ट विल गेट दोस प्रॉपर्टीज ऑक्शन सोल्ड ऑफ एंड will settle off the pay of the liabilities of the creditors and the lenders proportionately. Helpful in partnership, अगर सिंगल ओनर है तब तो सारा प्रॉफिट उस सिंगल ओनर का ही है, बट व्हेन देयर आर मोर देन वन पीपल डूइंग अ बिजनेस जॉइंटली इन अ पार्टनरशिप, देन each partner would like to know that the business is being carried on fairly. Each partner will get some share in the profits, will have to bear losses in a certain share, ठीक है। Each partner must have invested some amount in the business as capital. So all those records, if they are properly maintained, there will be no conflicts between the partners. There will be no doubt among the partners. Now coming to limitations of accounting. First limitation is not fully exact. There are certain entries like depreciation which are based on estimates. Depreciation क्या होती है? किसी एसेट का कितना वैल्यू लेस हो गई है, ठीक है। सपोज आपने 10 लाख की एक कार खरीदी तो एक साल में अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई, लेट अस से हम एस्टिमेट करते हैं कि अब 8,50,000 रह गई। दैट मींस 1,50,000 इज द depreciation, loss of value in 1 year, that is shown as an expense. Exact depreciation हम तब तक नहीं पता कर सकते जब तक एक्चुअली एसेट को बेचेंगे नहीं। So whatever value we estimate of depreciation, that is an estimate, that is not exact, ठीक है। उस वैल्यू को थोड़ा भी कम ज्यादा एस्टिमेट करेंगे हम तो हमारा प्रॉफिट अकॉर्डिंगली ज्यादा या कम हो जाएगा। So not fully exact. Does not indicate realizable value correctly. अभी हमने एडवांटेजेस में कहा था सेल वैल्यू डिटरमिन करने में हेल्प करता है, यस हेल्प करता है, बट नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, बिकॉज certain items are based on estimates as we just discussed. So it will give us a fair enough estimate but not exact sale value of the business. Third is does not tell the whole story. It tells only the quantitative story. It does not tell the qualitative story. Because in accounting, we record only those transactions which can be measured in terms of money. The efficiency or inefficiency of the employees and the owner,
the sincerity, the hard work, all these are very important for the business, but they cannot be shown in accounting because these are qualitative aspects. They cannot be measured in terms of money. Next point is window dressing. Window dressing means manipulations. Sometimes the accounts may be manipulated. The sales, the profit may be shown more or less than what actually is. If that is done, then accounting information becomes meaningless. It becomes misleading, right? So that can be one limitation. Then another important limitation is ignores the effect of price level changes. Prices keep on changing. कुछ गुड्स हमने पिछले साल खरीदे थे एट अ सर्टेन प्राइस, अब उनका प्राइस मार्केट में चेंज हो चुका है, लेकिन हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में अभी भी वो उसी प्राइस पे शो हो रहे हैं क्योंकि हमने पुराने प्राइस पे खरीदे थे. सो someone else who may have purchased the same goods, same assets recently may have bought them at a higher price, and since we bought them earlier, in our books the same thing is of a lesser value. In the other person's books it may be of a higher value, so it ignores price level changes. That completes the advantages and limitations also. Any doubt, anyone? We'll stop over here for today. Any doubt, anyone? No? Okay, thank you.